When we think about money, we often think about the cash we have or the bank balance we hold. But have you ever thought how economists look at the money supply? There's a lot of money which is circulating in the economy at all times. So it actually feels very overwhelming for us, the normal public, to feel that how do they manage this entire money supply thing? But trust me, it's not that tricky because it's actually divided into aggregates, into segments. So money supply does have parts through which it's very easy to calculate it. So if this question ever popped up into your head, so this is the exact video where we're going to talk about the monetary aggregates in a very detailed manner, and also we'll be talking about what were the new changes in that, which trust me, very few people know about. Let's get started. Now, to understand that how this money supply happens in our country, we first have to understand कि हमारी जो money supply है उसको हम measure करते हैं कुछ aggregates में. Traditionally अगर हम बात करें तो ये aggregates 4 part में divided हैं, which is M1, M2, M3 and M4. Now, what most people miss out is the M0 part. M0 is basically the high-powered money or the monetary base, some people call it. I assume that whoever is from the economics background, they must be recalling, क्योंकि हमें जब भी monetary aggregates के बारे में पढ़ाया गया है तो हमें M0 का concept बहुत ही कम पढ़ाया गया है. So let's talk about M0 first. M0 क्या होता है? M0 is basically the high part or the monetary base, as I said. It actually includes the currency which is held by the public, लोगों के पास जो पैसा है, the cash which is held by the commercial banks, and also the cash which is or the currency which is kept with the RBI. RBI के पास जो कैश होता है वो बेसिकली हम उसको CRR कह सकते हैं, जो कि कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का एक सर्टेन पार्ट RBI के साथ रखते हैं. तो ये तीन चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे M0 का पार्ट होती है. अब इससे एक मिसकंसेप्शन निकल के आता है और वो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि M0 में फिर तो पूरी ही मनी आ गई, मतलब बेसिकली हमें और एग्रीगेट्स पे जाने की जरूरत ही क्या है, यही पे हमें टोटल मनी दिख रही है, लोगों के पास पैसे, बैंक के पास पैसे और आरबीआई के पास जितने रिजर्व्स है. बट दैट्स नॉट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बेस की तरह काम करता है. इसका नाम भी, एक ऑल्टरनेटिव नेम भी मॉनेटरी बेस है. कहीं ना कहीं आरबीआई एक सोल अथॉरिटी है यहाँ पे जो पैसे पहली बार छापती है और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स उन पैसों को यूज करते हैं लेटर ऑन इन द इकोनॉमी फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. एंड क्रेडिट क्रिएशन से मेन मनी मल्टीप्लाइंग की पूरे कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट, वी कैन अंडरस्टैंड इट इन सम अदर वीडियोज. बट फॉर नाउ आई मस्ट टेल यू कि मॉनेटरी बेस एक कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है. इट्स नॉट अ टोटल सम ऑफ मनी. वील अंडरस्टैंड हाउ डू वी कैलकुलेट द टोटल sum of money. But for now, it's only the monetary base, or it acts as a foundation for calculating the money supply in the economy. So now let's continue with these monetary aggregates and come to M1. So M1 is basically, it comes under the narrow money category. We'll understand what's narrow and broad money later on. But M1 comes into the narrow money category, and M1 is basically the most liquid kind of money which is available. अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसकी जब मैं आपको डेफिनेशन या एक फॉर्मूला दूंगी आप खुद ही समझ जाएंगे. M1 में बेसिकली क्या होता है, इट इज द करेंसी विच यू होल्ड एंड ऑल्सो योर डिमांड डिपॉजिट्स फॉर द कमर्शियल बैंक्स. तो अब इसका अगर हम बेसिक मतलब देखें तो अगर आपकी जेब में 50 रुपए हैं और आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं जो कि डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में सेव्ड है बैंक में, तो बेसिकली यही M1 है. इट्स नथिंग but a money which is readily available by you, and that is why it's one of the most liquid form of money. So this is M1. Now it also includes one more thing, and that is other deposits by RBI. Now other deposits by RBI is something where I like to stress upon a little bit more, because it is included in all the 4 categories. ये M1 से लेके M4 सब में included होता है. So when we talk about other deposits with RBI, other deposits with RBI का मतलब बेसिकली अगर हम समझें तो RBI बहुत सारे फंक्शंस करता है. RBI का एक ही भी फंक्शन है कि वो CRR, SLR को रखे, उसके और भी फंक्शंस हैं कि वो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर ध्यान रखे, कोई बैंक ज़्यादा मनमानी ना करे, हर तरीके के फंक्शंस हैं. उसमें से एक फंक्शन होता है कि RBI बाहर की जो रिजर्व्स है उनको भी अपने पास रखता है, बिकॉज इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन और वी कैन से द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, राइट. सो इट ऑल्सो हैज द अथॉरिटी टू हैव द फॉरेन रिजर्व्स विद इट, राइट.
सो इसी को कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई में या फिर अदर डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल बैंक में इंक्लूड होती है. अब अदर डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल बैंक इज इंक्लूडेड इन ऑल द 4 कैटेगरीज, यानी कि M1 से लेके M4 तक सब में ये पार्ट इंक्लूड होता है. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट प्रायर ओनली. So this would be included in all the categories. Rest the differences, let's also talk about them. So when we talk about the M2 category of the money supply, it is nothing but an addition to the M1 category. So basically M1 plus it also has the saving deposits with the post offices. यानी कि post office banks के साथ आपने जो भी saving deposit करी है plus the M1 part, which is the currency which is held by the public and the demand deposits and other deposits of central bank of course. इन सारी चीज़ों को क्लब करके हमारा M2 एग्रीगेट बनता है. अब ये भी कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर सेंस है थोड़ा सा M1 का, लेकिन ये आता नैरो मनी में ही है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द M2 एग्रीगेट. Now let's come to the most widely used aggregate in India especially, which is the M3. M3 is the most commonly used form of money and also very liquid, I'd like to say. लिक्विडिटी की जो टर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं M1 पे सबसे ज़्यादा होती हैं और वो नीचे आते आते कम होती जाती हैं, लेकिन M3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज्ड है. और ये क्यों यूज्ड है ये आप समझ जाएंगे जब हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे. सो M3 इज नथिंग बट M1 प्लस द टाइम डिपॉजिट्स. अब टाइम डिपॉजिट में क्या होता है, टाइम डिपॉजिट में हमारे रेकरिंग डिपॉजिट आ सकते हैं या हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स आ सकते हैं जिसको हम FD कहते हैं. तो आपने देखा होगा अभी भी इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया दैट पीपल लाइक टू सेव देयर मनी और दे कॉल इट इन्वेस्टमेंट इन सम वेज, कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं FD में. ऑल्दो वी ऑल नो दैट FD में जब आप पैसे रखते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होते नहीं हैं क्योंकि FDs आर नॉट यूजुअली नॉट एबल टू बीट द इन्फ्लेशन. So basically, but still the problem is that most of the population of India feels that fixed deposits are the most safer kind of investment option for them, and hence they invest a lot of their money in fixed deposits still. इसीलिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो M3 है which includes the M1 all the categories of M1 and also the time deposit which has the parts like FDs and RDs and etc. So this is again the most commonly used kind of monetary aggregate. Now let's move to the last monetary aggregate which is M4. So when we talk about M4, M4 is basically the broadest money aggregate. ये broadest money aggregate क्यों है? क्योंकि इसमें unlike all the other 3 aggregates we have discussed, इसमें M3 add होता है, यानी कि M3 plus the total post office deposits. So basically M4 में हम ये ध्यान देंगे कि almost सारी ही चीज़ें क्लब हो रही हैं. It has M3 plus it has the total post office deposit. Now when it has M3, let's understand it step by step. When it has M3, it also has M1, obviously because M3 is M1 plus the time deposits. So it has M1, M3 definitely. And secondly, when we talk about the total post office deposit, तो उसमें M2 का भी पार्ट आ गया क्योंकि M2 में भी हम पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट की बात करें. एंड लास्टली ऑब्वियसली बात है कि जब हम टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के सारे ही पार्ट्स आ रहे हैं, यानी कि टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, राइट. सो बाय दिस वे M4 becomes the broadest money aggregate. और यहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि M3 and M4 comes under the broad money category for the obvious reasons because they have lot much to cover and they are less liquid, obviously readily convertible नहीं है. हमने M1 में देखा था वो बहुत readily convertible है. आपके पास 50 रुपए हैं तो आप तुरंत दे सकते हैं, that is obviously in liquid in hand. या फिर अगर आपके पास बैंक में भी है तो आप UPI कर सकते हैं, that's very readily available with you. But unlike these things, M3, M4 instruments, these are not very readily available, hence these are very less liquid. Now this was all about the traditional monetary measures. हम जो टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं या फिर जो यूजुअली लोग को पता होता है कि मनी सप्लाई कैसे मेजर होती है वो इन्हीं 4 तरीकों से 4-5 तरीकों से पता होती है. लेकिन what we do not know is the new monetary aggregates which were formed after 1998, and it has a very beautiful history and a very beautiful way that why were they actually introduced, and also the reason that why do we not know about it a lot, because 1998 है, it's not like कि अभी 2-3 साल पहले हुआ है कि we do not know about it. It's 1998. It has been a very long time, but still very few people know about the new monetary aggregates. So why is that so? Let's also talk about it.
नाउ बाय द 1970s और 1980s I'd say हमारे देश में काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इमर्ज होने लगे थे एंड दैट वाज द रीजन दैट पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर इनटू द एसेट्स थिंग, राइट? सो नाउ the government thought that the traditional monetary aggregates, which were M1 to M4, they seemed to be a bit outdated because the government wanted to know an individual's capacity of holding his income, which also included his assets, right? So उसके assets को include करना था, इसके लिए हमें एक नया एक framework चाहिए था और इसीलिए 1980s में या फिर टू बी मोर प्रिसाइज 1988 में हमारे न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स आते हैं which was under the framework of Y.V. Reddy, who also became our 21st governor of our country later on. But it happened in 1980s. Now, if we come to one thing कि हमें न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में इतना क्यों नहीं पता है, तो इसका एक रीज़न तो ये है कि क्योंकि ये चीज़ 1988 में हुई थी. Had it happened in 1991, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से याद होती क्योंकि 1991 के रिफॉर्म्स आर वेरी रेडिली अवेलेबल. एवरीबडी नोज अबाउट इट कि FII ज़्यादा आए, हम और लिबरल हो गए, ओपन ट्रेड होने लगा. लेकिन क्योंकि ये थोड़े टाइम पहले हुआ था, इसीलिए फॉर दैट सम रीजन नॉट वेरी मेनी पीपल नो अबाउट इट. एंड द सेकेंड रीजन आई फील दैट नॉट वेरी पीपल नो अबाउट इट इज द फैक्ट दैट न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स आर सर्टनली अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. वेराज जो ट्रेडिशनल मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी, ये बहुत ही जल्दी समझ आने वाली चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन या फिर एक बेस तरीके से हमारे लिए बना देती हैं अगर हमें मनी सप्लाई को एट अ फर्स्ट ग्लैंस समझना है. तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न हो सकता है. Whereas I feel that now it's also high time that we pay more attention to the new monetary aggregates because they actually provide a much more broader and a wholesome picture of looking at the money supply in the economy. So now when we start with the new monetary aggregates, let's start with NM1. NM1 is nothing but M1. It is very much similar, not very much similar, I'd say exactly same, because it includes the currency held with public, it includes the demand deposits with the commercial banks, and also it includes the other deposits with the RBI, right? So NM1 is exactly same to the M1 of the traditional monetary aggregates. Let's come to NM2. Now NM2 includes NM1 just like it happened in the traditional monetary aggregates, but NM2 in this case also includes the short-term financial savings in the financial assets. अपने फाइनेंशियल एसेट्स में क्या शॉर्ट टर्म सेविंग्स करी हैं, तो शॉर्ट अगर पीरियड के लिए हैं तो वो हम NM2 में लेते हैं. Whereas when we come to NM3, it includes NM2 and it also includes the long-term financial savings. So basically NM3 में short term और long term दोनों financial savings जो कि आपने financial assets में करी हैं उसको हम include कर दें. तो बेसिकली इकोनॉमिस्ट के लिए एक बहुत ही कंप्लीट पिक्चर यहाँ पे हो जाती है लिक्विडिटी वाइज भी और कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के एसेट्स या फिर जो करेंसी वो होल्ड कर रहा है उस तरीके से भी. सो दिस आई फील गिव्स द पीपल हु आर मेजरिंग द मनी सप्लाई अ मोर होलसम एंड अ मोर एग्रीगेट पिक्चर देन द ट्रेडिशनल मॉनेटरी एग्रीगेट्स. एंड व्हाई डू वी नॉट नो मच अबाउट इट? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड इट. So I feel that this video actually sums up a lot more about how do we see and how do we look at money supply from a deeper lens, because we have already discussed about कि money supply कितना होना चाहिए and unlimited money supply क्यों नहीं होना चाहिए. If these kind of questions ever popped up in your head, you can check other videos of mine. I've literally explained them in the most easiest manner. But this video was a bit more detailed version of all of them because I feel that this is also very important. When we look at money supply from a very overview or a very superficial perspective, it feels very overwhelming. When we look down a bit deeper, it often seems more overwhelming at times. But जब हम इसको layer by layer पढ़ते हैं तो ये इतना typical नहीं है. Rather ये बहुत ही simple है और ये बहुत ही ज़्यादा interesting है to understand. There are more interesting topics like credit creation, like money multiplier or monetary policies. These are something which is very much daily used concepts for everyday individuals, and yet these are not very much known to them. So I'll definitely make videos on them too in a very soon tenure. And that's all for this video. We'll see you very soon in the upcoming ones. Thank you so much for watching. See you very soon.